So come, let's discuss something very interesting today. So how do you burn calories? Very interesting point. And everybody, most of us like want to maintain a healthy weight or lose weight, and we try to exercise and go on a strict diet, and still few of us like struggle to lose weight. Okay, कभी वो लगता है मेरे वजन कम ही नहीं हो रहा. You hit a set point, you hit a plateau, and you don't go down. So there are different ways to burn calories. One is through obviously exercise. One is through diet. Do you think is there any other way you can burn your calories or yeah? Yeah, Pooja is saying nodding her head yes. Anybody else? Yeah. Yeah, Pooja, you can unmute yourself. Through our daily activities. During the day, whatever we do, like, walk, drink, do our daily activities through that. Okay. So पूरे दिन में हम जो भी activity करते हैं, you walk, you climb stairs, you drive, you okay. So that is called as NEAT. NEAT. So you should guys should know this term. It's a very interesting term. Any idea, anyone? What does NEAT stands for? The full form of NEAT? Anyone? No, it is non-exercise activity thermogenesis. I'll just type in the chat box. Non-exercise active. So can you give me some others? Now Pooja has answered. Others, what are the examples of NEAT? Thermogenesis. Yeah. So क्या क्या example हो सकता है? How can we include more NEAT into our lifestyle so that we burn more calories throughout the day? Any examples? मैंने hint तो आपको दे दिया already. Yeah. Come on. It's very easy. Yeah, Anita Bhabhi. Cooking, Cooking. Okay. diet, diet. Diet. See, diet or exercise छोड़ के. See, diet, it is good. Dieting is good, but strict dieting, going on a very low calorie diet, also sometimes slows down your BMR. BMR is basal metabolic rate. Okay? So going on a very strict diet, very restrictive diet just to lose weight is actually not advisable. Okay? So this is a myth that हम बहुत strict diet पे जाएंगे फिर भी कई लोगों का वजन कम होता ही नहीं because your BMR slows down. क्यों slow down होता है? Because when you go on a very strict diet, sometimes you tend to lose muscle mass. ओके तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट में आएंगे मसल मास लूज करेंगे जितना मसल मास कम होगा उतना आपका बीएमआर लो होगा एंड यू विल हिट अ प्लेटो okay so actually going on a very strict diet very restrictive diet is not a very good strategy to lose weight or burn your calories so Anita bhavi yes good that you spoke about diet but no dieting does not help in reducing your weight in the long run see weight क्या होता है weight is a function of two things one is fat one is muscle. If you lose your muscle, ultimately in the long run, your weight will go up. Our goal is to lose fat, not muscle. Okay, so going on a very strict diet इसके लिए अनीता भाभी आप कई बार मुझे फोटोग्राफ्स भेजती है कि दिस इज माय डिनर आई से नो इतना यू नीड टू हैव गुड न्यूट्रिशन सी कितना खाते हैं या क्या खाते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट है हाउ मच न्यूट्रिशन यू आर गेटिंग पर कैलोरी हम जो खाना खा रहे हैं वो कितना न्यूट्रिएंट डेंस है दैट मैटर्स अ लॉट. You can eat a big bowl of pasta and you can eat a small bowl of salad. That salad will have much more nutrition than a big bowl of pasta. आप कितना भी राइस खा लीजिए उसके साथ में अगर दाल और सम हेल्दी फाइबर या वेजिटेबल नहीं होगा then you are eating just plain calories nothing it has no nutrition at all so we need to be very careful about diet to lose weight. So diet I would say yes healthy diet yes very important but very restrictive diet a big no for losing calories okay. So Pooja said cooking. Come on, other examples. It's not very difficult. What are the examples of need that you can include in your lifestyle? Chalo, put your I'll thinking give caps one on. more, which we, often do is walk in between, like walk every 1 hour, after one Okay. hour, 500,000 steps. See, it's not necessarily that consciously आप करें. Suppose you're on a phone call. Okay. So yesterday I got a phone call from a student at 4 p.m. मैंने बोला wait for 10 minutes. I went down. Walk करते करते मेरे 2500 step हो गए. 2500 steps. So maybe you can do walking meetings. You can walk during a phone call. You can park your car slightly far away from your destination. थोड़ा सा दूर park करके you walk to. Come on now and give me examples. Now you guys give me examples. Dancing, yes.
Dancing Uh, also does burn calories. is it a few breathing exercise like Kapalbhati types? Few. Any Oh, any breathing exercise. It's not like you need to do very intense breathing or forceful breathing to burn calories. Yes, breathing also burns calories. Okay, so not necessarily pranayam, any type of breathing does burn calorie. In fact, you burn calories throughout the day when you breathe. Okay, any other including herbal teas, maybe herbal teas? Yes, they also increase your BMR. Yes, herbal teas, right? spices also. Yes, absolutely right. But I'm talking about NEAT now, non-exercise activity. Ironing, yes, ironing also. So घर का कोई भी काम हो गया, ironing, washing your clothes, Cleaning of house. cleaning of house. These things are, yeah, a part of NEAT. Any other that comes to your mind? Okay, चलो एक हो गया exercise, एक हो गया staircase. Yes, taking staircase. So see, we need to be conscious. ऐसा नहीं है कि आपने मेरे साथ 45 मिनट्स एक घंटा एक्सरसाइज कर लिया and then you are like sedentary throughout the day. Your BMR will come down. You have to stay active and ऐसा नहीं है कि हर घंटा मुझे 5 मिनट वॉक करना है. Unconsciously also make it a habit, that how can we include more activity into our daily routine. Very very important for your health in the long run. So this way you can maintain your BMR, that is basal metabolic rate, those who joined late. So we are discussing about how do you increase your BMR. Okay, so one is exercise, one is meat. In the exercise also it is very important to do strength training. Strength मतलब ये नहीं होता है that you take a fancy gym membership and you need to go and you need to pound the bar. This thing. It can be two things. One, it can be your own body weight. It can be, you can use light dumbbells also. Maybe some props that are helpful. जैसे हम towel use करते हैं, we use ankle weight sometimes. So any kind of strength training or resistance training is a better word. So resistance helps you increase your muscle mass. So the more muscle mass that you have in your body, the higher is your BMR. There is a direct relationship between the two. कई बार क्या होता है, as people age, उनका वजन बढ़ने लगता है. Why? Their BMR slows down. Why the BMR slows down? Because after the age of 30, you start losing muscle mass. Every year हम थोड़ा थोड़ा muscle mass lose करते हैं. That is why it is so important to include strength training into your regimen. At least to twice a week तो होना ही चाहिए. Minimum twice a week. You should do some form of strength training in your exercise routine. This is the most important thing. In sleep also you lose calories. See, calories हर चीज में use होती है. Because energy expenditure तो होगा. For digestion also energy expenditure is there. But what matters is that how much energy is being expended when you rest. This is BMR thing. The amount of energy that is used when you are doing nothing. Okay. So in terms of like money, you can say that you have to work hard to earn money. But when you have a certain corpus in your hands, how much money does your money make? Okay, so that kind of thing is like expending calories also. We need to understand this fact because most of us here are into our 30s and 40s. एंड बचपन में तो सब चल जाता है बिकॉज व्हेन यू आर बोर्न यू हैव अ लाइक गुड फंक्शनिंग बॉडी. फिर उसमें हम सब कूड़ा कचरा डालना चालू करते हैं, उल्टा सीधा काम करते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं, लेट नाइट्स खाते हैं, पार्टी करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं. वी लाइक बोलते हैं ना, हम अपना पूरे शरीर का सत्यानाश कर देते हैं. एंड देन आफ्टर द एज ऑफ 30 योर, बोलते हैं ना, थोड़ा 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 चालू होता है. बिकॉज सी अप टू द एज ऑफ 30 मेनी थिंग्स गो वेल फॉर मोस्ट ऑफ अस. अब तो खैर इट्स लाइक, अब तो 10-12 साल में भी कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक एंड ओबेसिटी एंड ये सब कॉमन हो गया. एंड इट्स लाइक क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है, हाँ डायबिटीज तो है, दवाई लेगा ठीक हो जाएगा, दवाई लेगा शुगर डाउन हो जाएगा. दिस थिंग हैज बिकम क्वाइट कॉमन आवर डेज. बट स्पेशली फॉर पीपल हु एंड हु आर लकी कि अभी तक कोई बीमारी नहीं लगी है, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ आप, मैं तो बोलता हूँ. जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So what are the things now that slow down BMR? Any idea what are the things that can slow down your BMR? One is losing muscle mass, मैंने एक तो बता दिया. और what harm can we do daily to our body to slow down muscle mass? Sitting long hours. Sedentary lifestyle, yes. So sedentary lifestyle तो हो गया, चलो वो हो गया. Okay. Losing muscle mass ये हो गया. How else do you slow down your BMR? Sleep. So if you are constantly sleeping late, this is another slow poison for your body. सबसे पहले आपका अफेक्ट होगा डाइजेशन. If you are sleeping late, you will have a weak digestion by the age you are 40 or 45. 110% it will go.
Why? What's the logic now? What's the logic between sleep and digestion? Come on, put your thinking caps on. Now you have been in the classes for more than a year. What happens during sleep? What happens to our gut microbiome? See, brain and gut, they are linked, right? I don't have much time, उसके लिए मैं ही जवाब दे रहा हूँ. Our brain and gut are linked. Gut is our second brain. ये आप समझ जाओ सिंपल भाषा में. So when you sleep, जो gut microbiome होता है, that gets recycled. Sleep is a recycling mechanism in our body जो भगवान ने बनाया है. So you can't like buy a new gut microbiome. हम खरीद के ले आते हैं, supplement ले आते हैं, normal हो जाएगा. If you eat outside food, if you drink, if you don't sleep on time, it won't get recycled on its own. No matter how much supplement you take, how much medication you take, you will suffer all your life, and then you could keep going on doctor, then you keep adding on laxatives, you keep adding on supplements. Here, for the basic function, pooping is a basic function, and so many of us, unfortunately, in my house also, people struggle with this basic thing with constipation. And when I say यार sleep on time बोलते हैं, यार तेरा तो एक ही सबका solution है, धूप खाओ sleep. The lifestyle, अगर lifestyle is the cause, then lifestyle is the solution. समझना पड़ेगा. Sleeping is very important if you want to improve your digestion, if you want to improve your BMR. बहुत बहुत जरूरी है ये चीज. Okay, what else can slow down your BMR? Okay, so lack of sleep हो गया, losing your muscle mass हो गया, sedentary lifestyle हो गया. What else? Come on. थिंक. और क्या स्लो डाउन करेगा हमारा बीएमआर? एजिंग. ओके, सो व्हाट इज एजिंग एक्चुअली? कम ऑन, लेट्स, I'll just extend this for 5 more minutes. What is aging and how does aging slow down our BMR? It's degeneration of the cells, maybe. Degeneration of the cells. Superb. We should clap for Anjuna aunty for giving such a wonderful answer for aging. Yes. See, aging क्या होता है कि when do say people age, there are certain biomarkers of aging. ओके, सो जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, और बेसिकली हमारा जो द थिंग दैट वी डिस्कस्ड, metabolic syndrome. So as that kicks in, you age faster. So some people may be the age of 50, but they may have a biology of 20. And opposite भी होता है, that you are 20 but you have a biology of a 50-year-old. Okay, so aging has nothing to do with your chronological age. Ki Manish is 41 years of age or he's this much years of age. That is not aging. 25 साल के भी है ना, 75 साल से भी खराब हो सकते हैं, vice versa. Both are possible. Yes, it's degeneration of cells. It's a cells बोलते हैं, they recycle. So आपके बोलते हैं ना, in your 7 years में तो पूरा body recycle हो जाता है. We have a new set of body every 7 years. पूरा बॉडी नया 100% है. वी कैन चेक ऑन द नेट कि आइस कितने दिन में रिसाइकल होता है, लिवर कितने दिन में रिसाइकल होता है. रिसाइकलिंग मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो एज वी एज क्या होता है, दैट रिसाइकलिंग मैकेनिज्म स्लोज डाउन बिकॉज ऑफ अ फॉल्टी लाइफस्टाइल. अगर फॉल्टी लाइफस्टाइल होगा तो लाइफस्टाइल में बोलते हैं ना लाइफ बचेगा ना स्टाइल बचेगा. दिस आई लर्न फ्रॉम अ योगा इंस्टीट्यूट टीचर. इफ यू आर लाइक just living a lifestyle to show off others and just thinking that you are cool by like hanging out late in the night, basically your that cellular regeneration mechanism जो natural है हमारे body में, which helps you heal, that slows down. See, metabolism happens, basic metabolic rate. Metabolism कहाँ पर होता है? It happens in the mitochondria. You should know this term, you know. Mitochondria क्या होता है? It's a part of the cell. हमारे बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स. ओके, हर सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर सर्टेन फंक्शंस हैपन. ओके, जिसकी वजह से हम जो खाना एनर्जी ले रहे हैं थ्रू सन थ्रू ब्रीदिंग, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी. समझ रहे हैं आप? तो आप खाना खा रहे हो, एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? कि हमने तो रोटी सब्जी दाल चावल फल सलाद ये सब खाया. हाउ डज दैट गेट कन्वर्टेड टू एनर्जी? इट हैपेंस इन सेल्स. सब सेल्स में होता है. एंड जब वो सेल्यूलर फंक्शन जब बिगड़ जाता है, आप कितना भी खाना खाइए बोलते हैं मैं कमजोरी क्यों लग रही है. आप कितनी भी दवाई लेते बोलते दवाई भी नहीं लग रही. बिकॉज मेडिसिन ऑल्सो टू गेट यूटिलाइज इन टू अ बॉडी, दैट मेटाबॉलिज्म नीड्स टू फंक्शन प्रॉपरली. एंड हमने बोलते ना, हमने कसम खा ली है कि कौन कितना जल्दी उसका सत्यानाश करता है हमारे मेटाबॉलिज्म का. एंड देन यू रन फ्रॉम वन पिलर टू अनदर, वन डॉक्टर अनदर, कि डॉक्टर साहब मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ. देन यू आर लाइक
You don't look at your own, बोलते हैं अंदर झांक के नहीं देखते हैं that what wrong we have done for the past 30-40 years, जिसकी वजह से आज ये situation आया. Very important this for everybody has to understand this metabolism क्या होता है. What is metabolism? That energy that's get converted, if that is faulty. सपोज एक मशीन है, सिंपल एक जूस वाली मशीन है, गन्ने की मशीन है, गन्ना हमने डाला, गन्ने की मशीन अगर ठीक नहीं है तो जूस कैसे निकलेगा उसका, अगर मशीन ही खराब है हमारी. तो कहना कि disease is not normal. Don't accept disease as a normal part of aging. No, not at all. Disease is not normal. Aging is not normal. We have these tools जो हमने यहाँ सीखे हैं कि पहले तो हमें पता होना चाहिए. Bring this into awareness. BMR क्या होता है ये. And then consciously take steps. Write a journal. set journal लिख लीजिए. Reminders रखिए. Cell phone में reminders रखिए. इतना सारे ग्रुप में हमारे reminders आते हैं. ब्रेक्स के लिए, वॉक के लिए, डाइट का. इतना ज्यादा मोटिवेशन है. But you need to do it for yourself. Like, to understand these things. What slows down your BMR is if there is cellular degeneration in your body. Clear everybody what is BMR, what is metabolism, how do you decrease BMR, कैसे हम अपने आप अपना सुसाइड कर रहे हैं. सुसाइड इज बेसिकली you are committing suicide if you are like another thing, another factor in diet that I want to cover is processed food. I just keep on repeating this because I want this to go into your बोलते हैं ना subconscious. बिकॉज बॉडी जो होता है, हमारा जो शरीर है, दैट बोलते हैं ना आइडेंटिफाइज प्रोसेस्ड फूड एज अ फॉरेन बॉडी. सिंपल एनालॉजी, पेट्रोल काले उसमें आप डीजल डालोगे तो वो क्या आइडेंटिफाई करेगा उसको, पूरा इंजन खराब कर देगा, right? So do you think our bodies were made to eat those powders and those packaged foods and those biscuits and those chips and those Red Bulls and alcohol and cigarette and हाँ, क्या हमारा बॉडी इस चीज के लिए बना होगा? सी आई कंपेयर बिस्किट्स विद सिगरेट. ओके, ऐसा नहीं है कि सिगरेट से कैंसर होता है तो आप बहुत ज्यादा आप प्रोसेस्ड फूड खाओ, अल्टीमेटली आपको हार्ट डिजीज, डायबिटीज हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है मुझे कैंसर नहीं चाहिए बट मुझे हार्ट डिजीज चलेगा. नो, आई डोंट वांट बोथ फॉर माई सेल्फ. तो प्रोसेस्ड फूड इज इक्विवेलेंट टू सिगरेट. दैट शुड आल्सो एक्चुअली शुड कम विद अ वार्निंग. सो योर सेल्स, नाउ सपोज एक सेलुलर स्ट्रक्चर है, हमारे अंदर एक मशीन है, बराबर. उसको पता है कि एनर्जी कैसे कन्वर्ट करना है, भगवान ने एकदम परफेक्ट बना के भेजा. एंड बचपन से हम क्या करते हैं, बच्चा 1 साल का हुआ नहीं, केक केक टेस्ट करो, केक टेस्ट करो, केक तो जरूरी है, बर्थडे है, बच्चा तो केक खाएगा ही. सेल्स क्या करता है, आइडेंटिफाइज दैट इज अ फॉरेन बॉडी. भगवान ने मगर बहुत अच्छा शरीर बनाया, एटलीस्ट 25-30 साल तो बराबर चलता है अगर हम कितना भी उसमें कचरा डालेंगे. ओके, बट प्रॉब्लम क्या हो गया ना, जोमेटो हैज कम इन, स्विगी हैज कम इन, देयर आर फ्रेंड्स, देयर इज पीयर प्रेशर, ऑफिस में कलीग्स हैं, बर्थडेज है, पार्टीज है, कुछ ना कुछ है, अरे यार आज तो होगा ही, एक बार तो चलता है, एक एक बार करके दैट बिल्ड्स अप ओवर द पास्ट 25-30 years and then the disease kicks in. Then your body processes enough is enough here. Now that entire systems breaks down. एंड देन धीरे धीरे पहले डायबिटीज होगा, if you're लकी होंगे तो पहले ब्लड. लकी इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज नाउ पीपल डायरेक्टली गेट दैट वेकअप कॉल. या वेकअप कॉल भी नहीं आता, डायरेक्टली कॉल ही आ जाता है सीधा, जैसे मैंने बताया लास्ट वीक जो मैंने सुना दो स्टोरीज. तो डोंट टेक योर हेल्थ फॉर ग्रांटेड. इट्स नॉट लाइक बोलते ना कि भगवान ने शरीर दिया इसकी इज्जत करना सीखो. समझो ये सब क्या हो रहा है, हम शरीर में क्या डाल रहे हैं, हमारा कितना मूवमेंट है, हाउ यू आर स्लीपिंग. एंड if you are gaining weight in spite of doing all these, or if you're not able to lose weight, समझ जाइए आपका BMR बहुत slow है. Your BMR is slow and try doing these things. Don't go on a very strict diet. Absolutely not. That is not the solution in the long run. And exercise में क्या करना है, which form of exercise now? Everybody knows now कौन सा which form of exercise we need to do. Strength training. Strength training, very important. And चलो strength training quickly, I'll take one more minute now, just one more minute. So what is strength training? बहुत जरूरी है, हम आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने वाले हैं. तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन आई से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? कम ऑन. Making our muscles strong. मेकिंग अ More. मसल स्ट्रांग. ओके, एनीबॉडी एल्स, व्हाट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? क्या हो सकता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में? अच्छा, हम चलो चलो एग्जांपल लेते हैं एक्सरसाइज का. वी डू एक पद आसन. ओके, दैट एक पैर उठा के जो हम करते हैं, इज दैट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? पूजा It's a इज सेइंग नो. balancing. 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 बट दैट इंक्लूड्स स्ट्रेंथ आल्सो, बिकॉज एक पैर पे बैलेंस करते हैं तो जिस पैर पे बैलेंस करें दैट इज स्ट्रेंथ आल्सो. देखिए ये हमें पता होना चाहिए. ओके, तो दैट इज ऑल्सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. तालासन, व्हेन वी डू तालासन क्या होता है, अवर काफ्स ऑल्सो गेट स्ट्रेंथेंड. दैट्स द ब्यूटी ऑफ योगा एक्चुअली.
तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब ये मत समझिए कि डंबल जरूरी ही है या कोई जिम ट्रेनर जरूरी है. दिस पीपल लाइक मनीष ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बोल दिया, जिम मेंबरशिप साइन कर लिया, मालूम है कितना दिन जाते हैं सबको पता है, एंड यू गो एंड यू स्टार्ट पाउंडिंग ऑन वेरी हेवी वेट्स. प्लीज डोंट डू दैट. दैट इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड. स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में लीन मसल मास हमें डेवलप करना है. सी प्रॉब्लम क्या होता है व्हेन वी ट्राई टू कॉपी अदर्स. You should know what game you are playing. See, anybody here want to become Hrithik Roshan, want to act in a movie, want to become a model, or want to become an athlete like Virat Kohli? किसको भी बनना है यहाँ पर वैसा? हमें वैसा नहीं बनना है. They are playing a different game. We are playing a different game. We are householders. We are not those athletes or those supermodels or actors. Don't try to copy others. This is a big mistake. Don't try to look like them. They put a lot of chemicals on their face, on their body, into their bodies because they have to look in a certain way. अंदर ही अंदर सब खोखले होते हैं, most of them. Okay, so don't try to copy others. When I say strength training कि हमें muscle mass होना चाहिए, सलमान खान जैसा muscle होना चाहिए, that is not strength training. You need to be lean muscle. Lean muscle build करें. जितना हम classes में करते हैं exercise, believe me, that is more than enough. Rest of the days you just go for a walk or a slight jog or run, whatever is comfortable for you. You are good to go. Because we actually cover everything in our classes also. Okay, so don't have this false notion of strength training that you need to pound. ऐसा छोटी छोटी एक्सरसाइज में हम कैसे स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं, चलो लेट्स एक्सपीरियंस दैट टुडे. लेट्स स्टैंड अप ऑन द मैट.